Hi everyone, so welcome to day 12 of the tarot series, and today we are going to learn more about the Justice card, which is card number 11. So this is a card of karma. As you can see that over here a judge is sitting on a chair and there are two pillars on both his sides, which shows that there is a lot of stability also in the card. Purple color is showing that you need to use your crown chakra. So this is a card of karma, as your karma is so will be the outcome. जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा. That is the meaning of this card. And if you are a victim, then the result will be in your favor, provided you follow ethics. You have to be ethical. Only then you will get a good result. This card advises you to seek balance and be fair in your dealings. It also represents legal matters, paperwork, dealings with the government. So, very mindfully you have to sign the papers and go through the paperwork properly. If you have been kind and mindful of your karmas, then this card showing up will mean that you will enjoy the fruits of your positive karma. For the ones who are unethical, this card is a warning to correct their karmas or to be ready to face consequences. And the key words over here are karma, balance, law and legal matters, fairness, equality. So this is a card of courage also. एंड ये कार्ड ये जो है ये लिब्रा सन साइन को डिपिक्ट करता है और कहीं ना कहीं ये थ्रोट चक्रा से भी कनेक्टेड है. सो इसका एक सीधा सा एक सेइंग है दैट एज यू सो शैल यू रीप, कि जैसे आप बीज बोओगे वैसे ही तो आप फल पाओगे. तो अगर आपने केले के पेड़ के बीज बोए हैं या धनिया के पेड़ के बीज बोए हैं तो धनिया ही उगेगा. और अगर आपने बनाना का बीज उगाया है तो आपको बनाना ही मिलेगा. आपको बनाना का बीज उगा मतलब बोने के बाद आपको धनिया तो नहीं मिल सकता ना. सो दैट इज बेसिकली द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑल्सो एंड द मीनिंग of this card. It is a card of strength, force, power also, and authority and courage. So let's read what's written over here. Justice is showing you that all actions have consequences. Results will be in your favor if you have good karma. It is also a signifier of legal matters being resolved in a fair and balanced matter. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रिवर्स कार्ड. सो अगर रिवर्स में आता है ये तो इसका ये मीनिंग होता है दैट इनजस्टिस और अवॉइडेंस ऑफ कार्मिक जस्टिस. दिस मे टेक द फॉर्म ऑफ बीइंग ट्रीटेड अनजस्टली इन योर लाइफ और सिचुएशन वेयर यू आर बीइंग unfairly affected by the choices or actions of others. So अगर ये कार्ड उल्टा होता है तो मतलब आपने अगर डिसऑनेस्टी की है या आपने कोई भी गलत काम किया है तो आपको उसका अनफेयरनेस ही आपको रिजल्ट मिलेगा. एंड जस्टिस तो हमेशा, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा है तो जो आपने किया है वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा. So just beware of your karmas. That is what the card is telling us. So I hope you understood the meaning of this card, and thank you so much for following Soul Light Meena.